but है Argentina. These are few countries you will have lot of scope. Problem कहाँ है? Problem is that language. In all these countries, the problem is this in the instruction. If you go whether as a teacher or as a student, you have to have a good competence over Spanish language. तो आपको Spanish जानना, this is one of the, but if you are going for a short period, for 1 month, 2 months, on some research project or on some exchange program, then it's okay. But as such, if you are going for long term, if you want to pursue higher education, or if you want to build your career over there, you want to be, then you have to have a good command of Spanish in any of the Latin American countries except Brazil. As such, as this is for one in general. So sir, you took the course in Spanish from JNU before going there? Yeah, I did my masters in Spanish, madam. I have done my studies in Spanish language itself. मेरा स्पेशलाइजेशन लैंग्वेज एजुकेशन के ऊपर ही है, सब रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन. और एज फॉर प्रोस्पेक्ट्स देर आर सम scholarships, but you have to check. It's not very. In Europe, you will have more. More often you will search and you will get, and some you have to you will look for. In Latin America, there are not lot of scholarships being provided at the graduate level. At the postgraduate, a little, and at the research level, postdoctoral level, there are quite number of scholarships, especially in Chile also. So if you want to pursue higher, research oriented. If you want to go for those courses, there you have a lot of. There is every country has this CONICET, or every country has this. What do you call it? Like Chile, they have changed the name. It's ANID. ANID is National Agency for Development or something, which is like research, grant commission, UGC. Like that only, which gives lot of funding. They give, if you have, of course, you have to send the proposal, and they have this evaluation and all. It's very, very hard to get one, project from there. As what is my, in India, it is a little more easier, but funding is very less here. I have seen. I'm not talking about science. Okay, everything, whatever I am talking, is in the field of social science and humanities, and this happens in Chile also. It's very science centric. That's a world phenomenon. In the world, this is happening. They are kind of focusing more towards science and leaving behind social science and humanities. As for the research, those who are at the postgraduate level or in PhD, I have given some talks in BHU, in Doon, in JNU, and etc. On one of the, I will talk about that only briefly in 5 minutes. I teach courses of methodology, research methodology, okay, qualitative, quantitative mix, and I also teach psychology of learning and all. But in research methodology, one topic which I have come across in last 3-4 years is the systematic review of literature. Those who are doing PhD, they know this review of literature is one topic which is important, apart from formulation of hypothesis, objective research question, but review of literature is an important topic. But this systematic review of literature is different from general, traditional review of literature. वो जो है वो उससे differ करता है. कैसे differ करता है? Systematic review of literature जो है एक प्रोसेस फॉलो करता है. वेरी सिस्टमेटिक वे में 4-5 स्टेप है. पहला स्टेप है, यू हैव टू फॉर्मुलेट अ गुड, वेरी कॉन्साइज, प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चन. एक क्वेश्चन, और ये जो है एक पार्ट हो सकता है. दिस इज नॉट अ रिसर्च, ओके, दिस इज पार्ट ऑफ योर, आप अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में किसी एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं या MA में भी कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर के साथ ये कर सकते हैं. एक रिसर्च मतलब एक पेपर लिखना है, and if you are trying to build your career in academics, and this is another change which I have seen when I have traveled, they start from the very beginning. That means from the postgraduate level they start working on the articles. मैं यहाँ PhD कर गया JNU से, और किसी ने मुझे एक ट्रेनिंग, एक बात नहीं बोली कि
बेटा ऐसे लिख लो, बेटा ये काम कर लो, ऐसे कर लो, which they teach, which they train. Okay, this is one of the major differences, at least in my field. I won't say that I won't be generic in this way, that no, it's not happening, at least in my field. Still, I won't say India is lagging behind, but still a lot more can be done. तो मैं बोला था ये जो है एक फर्स्ट स्टेप है रिसर्च क्वेश्चन एक फॉर्मुलेशन का. सेकंड स्टेप है ये जो रिसर्च क्वेश्चन बना उससे 2-3 आपको की आइटम्स सर्च करने हैं, की आइटम्स लेना है. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो कौन है पीएचडी कौन कर रहे हैं, जस्ट एक क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ आपसे रिलेटेड. हु इज डूइंग पीएचडी, एनीवन? आप कर रहे हैं मास्टर स्टूडेंट कोई मास्टर स्टूडेंट? यू टेल मी अ क्वेश्चन विच यू वांट टू आंसर. तुम लोग बताओ क्या एक क्वेश्चन, जस्ट आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. अब मैं अपने फील्ड से दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपसे कोई एक, यू टेल मी अ क्वेश्चन. टीचर क्या कर रहे हो रिसर्च? ये एक इनफॉर्मल टॉक है, इसलिए आप लोग को डर. क्या प्रॉब्लम ये भी इंडिया में मैं भी डरता था, मैं जब वहाँ बैठा रहता तो मैं भी बहुत डरता था. अभी बट डर वन छोड़ दीजिए, गलती होगी, मान के रखिए कि गलती होगी. क्वेश्चन इन सेंस कैसा रिसर्च क्वेश्चन मतलब कुछ रिसर्च जिस टॉप आप लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च के बारे में, हाँ, तो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के थ्रू यू वांट टू आंसर सम क्वेश्चंस, नो, यू हैव सम ऑब्जेक्टिव. आई वोंट गो टू ऑब्जेक्टिव, बट एक क्वेश्चन एक आप मुझे बता दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो ज्योग्राफी में क्या हो सकता है, आई डोंट नो, एनी पीएचडी कैन गाइडेंस, जस्ट गिव मी वन एग्जांपल. आई एम नॉट आस्किंग. what are the indicators of food security? For example, what are the indicators of food security in some context? In India, or I don't know. So indicators, food security. Here the two concept is, two keywords are indicators and food security. Or अगर contextualize करें, I don't know if I am right. In some context, no, in India, in Asia, in Europe, something. So in that case, I will have 3. हाँ? ये 3, ये तो फर्स्ट हो गया रिसर्च, सेकेंड हो गया ये की वर्ड्स लेके, थर्ड हो गया सर्च इन डेटाबेस. अब आप लोग अगर डेटाबेस बोलेंगे क्या है, तो डेटाबेस जो है, अच्छा टाइम ज़्यादा हो गया क्या? डेटाबेस हो गया जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं वो लोग स्टोर करके रखते हैं. फॉर एग्जांपल आपने वेब ऑफ साइंस सुना है कि नहीं? गूगल स्कॉलर आपने सुना होगा, जो है वेरी कॉमन. एक्चुअली दैट्स नॉट अ वेरी गुड, दैट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड डेटाबेस एज सच, बिकॉज एवरीथिंग इज, कोई भी कुछ लिखा वहाँ पे स्टोर हो जाता है. बट गुड डेटाबेसेस एग्जांपल्स आर स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, और जिसको ईसी बोलते हैं, साइंस साइंस वाले ISI EC वो बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड डेटाबेस. DOAJ, and there are few other examples of good databases. You select any, yeah. Usually they are behind the paywall, no? So we usually use a signer to crack. I'm coming to that. So select 2 databases. So you have research question, you have keywords, you have database, and then I don't have time to show you. There is a Boolean operators. You will search, you will get it. Boolean operators, there are 4. Mainly used is and or. This is to broaden or shorten your search. तो इस केस में हम सर्च करेंगे इंडिकेटर एंड फूड सप्लाई एंड फूड सिक्योरिटी एंड एशिया. और इसको जो है हिट एंड ट्रायल से चेंज कर करके कुछ सिनोनिम, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, सिनोनिम के साथ हम लोग सर्च करेंगे कोई 1, 2, 3 जो भी आपका है, और उस डेटाबेस से जो भी आर्टिकल्स डाउनलोड करेंगे, हमें जो भी आएंगे उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे. उसका भी प्रोसेस है, अभी है नहीं मेरे पास टाइम, नहीं तो आपको मैं दिखा देता. और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, और ये एनालाइज करने के बाद एक रिसर्च क्वेश्चन जो भी आपका फॉर्मुलेट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, जनरली सिस्टमेटिक रिव्यूज आर डन to see the trends and to provide future recommendation in the field of food security. For example, what are the themes that are being researched upon in the field of food security or regarding the indicators of food security in some context. ये आपको, और इस बेसिस पे आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं.
कमिंग बैक टू द पे वॉल एंड साइंस, अब क्या होता है कि ये जो आर्टिकल्स वहाँ शो करेगा कोई भी डेटाबेस में, ऑल आर्टिकल्स आर नॉट, यू कैन नॉट डाउनलोड, यू हैव टू पे फॉर दैट. तो देयर आर 2-3 ऑप्शंस. One option is the institutional library. Generally, you have to go to the library, ask them that. Generally, Scopus तो रहता है यहाँ पे, पता नहीं Scopus या वेब ऑफ साइंस कोई एक रहता है. नैनो साइंस है ना यहाँ पर, तो ज़रूर होगा वेब ऑफ साइंस, मोस्ट वो लोग ये लिए होंगे. तो ये और Scopus तो लाइब्रेरी. दूसरा है एक नया लास्ट 4-5 ईयर से जो जिनका एग्जांपल आपने बताया, एक SCI हब, you science hub, you search in the Google, they give you a web page, you put DOI number, every article has a DOI number, and they will give you the whole article free of cost. That is, I won't say illegal because that's legal for me, I won't have to pay, and I follow that method. Whenever I don't have, I follow that. So that's a good way to download articles. और एक बार आर्टिकल डाउनलोड हो गया तो उसको एनालाइज करने का भी प्रोसेस है. यू लुक, यू सब, फर्स्ट इज द टाइटल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा अगर पहले टाइटल पढ़ा, टाइटल देखा नहीं ये मेरे, हम जो सोच रहे हैं, जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता ये है, उसको रखा. टाइटल के बाद सारा टाइटल्स पढ़ा, उसमें से 100 में से मान लिया 20 में निकाल दिया, 80 बचा. 80 में से नहीं, हेक्टिक टास्क है, इट्स नॉट दैट इजी. That's why generally systematic review is done in a group of 2-3 with your guide. और उसके बाद abstract पढ़ा. तो पहले टाइटल पढ़ा, फिर abstract पढ़ा, और दोनों पढ़ के लगा कि हाँ ये जो है 40 आर्टिकल मेरे काम के. फिर 40 आर्टिकल को आपको पढ़ना है, उसमें से भी हो सकता है 5, 10, 15 आपको निकालना पड़े, क्योंकि आपसे आप जो क्वेश्चन करना किए हैं उससे रिलेटेड वो नहीं है. In general, I have seen systematic reviews in my field. They come to 5,000, 10,000 articles on the first search, and they finally include, inclusion phase, they include 16, 24, 30, like that. So for those who are doing PhD, this could be, you can search upon, I'll give you my cards also if you want. You can think of doing, I don't know whether you have passed your synopsis or not, but this could be a good starting point if you want to pursue in academics, to start with writing some article. Or don't get afraid, those who are doing your MA, लिखिए. नहीं तो अगर academics में जाना है और अगर कहीं और, if you are thinking, then also you start writing. That's my one thing I would like to say. I don't know if you have any question, doubt, any clarification, or any